Bismillah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to do this ovarian cancer. Mostly it will be for the theory, but it can cover also with the talks also. And then we are going to do, inshallah, this MCQ. And this is I am dedicating this for my parents because this their wish that I have to do this free online. So this dedication for my parents, Allah give them to Jannah, and everybody, parents who has been gone, Allah give them Jannah also. Okay, I mean, so now we will start from here, this ovarian cancer. That's I told you, now this will be mostly go to the theory we are going to do it. So now the incidents and some facts we have to know. Okay, the facts is that ovarian cancer is very rare. Okay, the lifetime risk is 1.22%. Then ovarian cancer, this is the fifth leading cause of the cancer death among the women. See, in the women, the top one is the breast cancer. And then they say that from their side, we have to know that then it will come the skin cancer. Please, all these things you can find it in the, inshallah, I will put for the YouTube. So you can take from there, everything there. Okay, so then they say this is the highest mortality in all gynae cancer. Many cancer we know already, but the highest mortality with this the ovarian cancer. Why this is the highest mortality? Because it is discovering late. And please, all these points which I have written in the red, these are the MCQ questions. So please be careful about these are the MCQ questions. When you see in the YouTube, then just make by yourself this one, these are the MCQ questions. Okay, and the prognosis, now the question is that the prognosis means survival of depends upon the stage and the histological type and how much the cancer is spread. Okay, Ji, these are the things we have to know. And this approximately when we are discovering the ovarian cancer, it is already in the high-grade serous carcinoma will be there. And most 90% of them present in stage 3 and stage 4. That's why it is a poor survival. Then he say if she has a family history of ovarian cancer, it will increase the risk of the ovarian cancer. Now we are going to do what are the factors which are increasing the risk and which are decreasing the risks. Okay. So other one is that inherited gene mutation, if she is having it. And then another we will call it, if she has a sign and symptom of ovarian cancer, which will include the pain and the swelling in the abdomen. These are the facts, just we are talking about the facts. Now we will come for the exact starting from there. Exact starting is there. What are the risk factors which will ovarian cancer has the increased risk? So please, this will MCQ and this will be the talks question. Family history of ovarian cancer, like in the first degree relatives, like mother, daughters, sisters, anyone. And she has a BRCA genes, BRCA1 and BRCA2 genes. And other hereditary characters means what are these are the ones, Lenz syndromes, which we call it if she is having a ovarian cancer, uterine cancer, and this one colon cancer. This is a mixture of that one. Then if she is having endometriosis and then obesity, postmenopausal hormonal therapy means HRT she is taking, and she is a tall height woman. These are the things. Okay, so now we already know that what are the risk factors. Okay, now we have to know what are the sign and symptoms. But the problem here, the sign and symptoms, they are coming very, what we call it, we cannot discover it early. Okay, and as much the older age is coming, the risk is increasing. So sign and symptoms on which basis we can have it say that she is having a ovarian cancer. It cannot be discovered early. Okay. So it is mostly it will appear in the advanced stage. So what are the sign and symptoms are this one? Because they say that irritable bowel syndrome. If she will appear with the irritable bowel syndrome, means what? It means she will present that she is having a bloating, constipation,
all the time. If she have continued these three main problems more than a month, 6 times in a week she is having, and more than 4 weeks she is having this problem, then she has to go to the GP or whatever doctor she is to find it, because this will be the, and especially if she is postmenopausal, then she have a more risk of this ovarian cancer. Okay, now we go that she is that sometimes she will feel a lump in her pelvic area, or maybe she is having a swelling, or sudden means now it will if the cancer is a big one, it will affect on her bowel and the bladder. Means bladder, bowel and bladder means she will have a constipation and frequency of urination. So these are the things which she can have it, her sign and symptoms, which we tell it. Doctor, please, I'm sorry, because these we are talking about all the things about this theory. So these are the things which are important for the theory, and these are the MCQs question which I am telling you, that she will present mostly with the irritable bowel syndrome. So this is the most important MCQ answer. So can we prevent it? What are the prevention of this ovarian cancer? So breastfeeding and oral contraceptive pills are the one, and they are preventive. And other prevention is if she's taken NSAID, these are the one. And if but these are the things which we can that she can have a preventive measure, she can have it. Okay, so now we finish these things. Now we will come to the examination. What examination we are going to have it? Vital signs, BMI. BMI is very important. If she is having a high BMI, then she is increased risk of the ovarian cancer like endometrial cancer. Then we have to do the examination of the chest, limb, because she can have if it is an advanced stage, she can have a DVT and she can have a edema. Now, what are the investigation which we are going to have it if we think that she is having ovarian cancer? Doctor, any ovarian case which we have, whether she is means benign or she is having a malignant ovarian, we find it out, then we have to go the RMI. And doctor, this is the most important question. See, we have to do CA125 and TVS. TVS means RMI. RMI we do, and then we have to refer her. Now, these are the values which we have to do. So what is the important of the RMI? And this is the question they will ask in MCQ, how you will calculate the RMI. Okay, so RMI is the risk of malignancy index. It is the U into M into CA125. Doctor, sometime they will give you the this thing, then you have to calculate. And there is they will give you the values, and you are the one who has to say that it is a malignant or it is a benign. So in the exam, the risk RMI is the one. So please remember this thing, this risk of malignancy index. Okay, so how you calculate it? U into M into CA125. If they will give you the value of the CA125, okay, well and good, you have to put that value. M means menopausal state or perimenopausal, means what she is, perimenopausal or she is menopausal state. If she is menopausal, you have to give her the score 3. If she is perimenopausal, the score will be 1. Okay, ultrasound ki scoring they have given it. So what they have, if she is a multilocular cyst, solid area, bilateral lesions, ascites and metastasis, these will have a have a point. So if she has two features, so if any of the two of the format, then we have to put that feature. This we will give it. This will put in the U. This will be the ultrasound value. So whatever we are getting it, we are putting it 2, 3, whatever features we get it there. Okay, so we make this formula. Please remember by heart this formula. Risk of malignancy. Doctor, I will just say, because my group members are there. They are writing it. Just give me a 1 second, so I will give them. Because most of them, they are in thinking that it is a this means Zoom. Sorry, this one.
This one I'm making it Google Meet. Google Meet. So they are saying not, it's not opening. Mostly because I'm doing this thing, but I say, okay, we'll do it today with this one because this is a very important topic. So it will be easy because this YouTube will not take the on this one Google Meet recording. They will take the Zoom recording. That's why I have to put in the Zoom. So I hope they will understand. Some will come. 1 second, I will just make this one forward them. Okay, so what we have it here. So okay, we will continue our things. Okay, this we finish it. Then what we have to do this investigation, this means CA-125 and RMI we have to do. And this RMI is the important one which will make you. अस्सलामुअलैकुम मैम। मैम कब शुरू हुआ है क्लास? अभी मैंने 4 बजे शुरू किया है, 15 मिनट हो गए। अच्छा, सॉरी मैम। कोई बात नहीं है डॉक्टर अनिला, आप लोग को पता नहीं था ना मेरे जूम पे है। प्लीज आप लोग ये कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जूम पे शुरू है। लिख देती हूँ मैं, डॉक्टर साहब मैंने लिखा है कि जूम पे है। ठीक है जी, ओके। चले अब हम आगे करते हैं। ये हो गया आरएमआई, ये इस पे मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। यूट्यूब पे मैं लगाऊंगी तो उसी की वजह से मैंने लिखा है, डाला है इस पे। तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर लेट भी आई हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, उसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है और ब्लड ग्रुप करना है हमने, और एक्सरे चेस्ट करना है, इमेजिंग करना है। इमेजिंग में हम क्या करेंगे, जाहिर बात है हमने टीवीएस करना है। टीवीएस से ही हमें पता चलेगा क्या देखना है, एब्डोमिनल और वॉट एवर इट इज। देन वी हैव टू हैव अ सीटी, एमआरआई, पीटी सीटी। पीटी सीटी डॉक्टर साहब, दिस मोस्टली वी आर डूइंग इट फॉर द cancer is coming back. This one we do PTCT at that time. Okay. Okay, and now we will come the main thing we are going to do it. And the main thing is that one, that we have to know what is the classification of the ovarian cancer. Epithelial ovarian cancer will be have its sex cord cancer and then germ cell. Okay, in the germ cell, what is the things there? Please later on, you when it is in the YouTube, you make it the screenshot. So you, or otherwise you have to make in your cell. These are the classification, because you know in the germ cell they will ask what is germ cell. Dysgerminoma is the germ cell. Yolk is the germ cell. Choriocarcinoma is germ cell. Teratogenoma is germ cell. So please, this is the MCQ question they will ask it. If you are going for this one exam next week, inshallah, because FCPS finished, IMM is finished, only MCPS is left. So then another one is the sex cord stomas. They are not interested this one so much. They are interested in germ cell, and the surface epithelial cancer means serous, clear cell, mucinous. These are the only classification we have to know. Okay, now the important question is arising. The prognosis, I will show you in another slide how the prognosis, because this question they will ask it in MCQ, and this question is for the talks also. So the prognosis depends upon which type of, means health of the patient, age of the patient, wishes on the patient, what she wanted it, and which type of cancer she is having. She is having a dysgerminoma, she is having a epithelial serous carcinoma, or stage, and which grade of the tumor she is having, and if she is having ascites or not, or she is having a BRCA genes are present on there or not. The most important thing, her health, health, and how much the tumor is spread. These are the factors, and these are the factors which you prognosis, this prognosis, and it will come also for the means we call it treatment. Treatment also depend upon on this basis. Okay, now the important things we have to know, that how the cancer is spreading. It will spread in 3 ways: by the tissue, lymphatics, and the blood. ठीक है जी. So tissue is spread where it is begin. Start from there. This, you remember we last time talked it local primary tumor. Okay, then from the primary it can go to the lymphatic, and from the lymphatic it can go also through the blood. It can travel to the other parts of the body. Then it will go through the blood, and it can go for the metastasis. Then it will going to be a secondary tumor. This we have to know. Okay, so now we finish it. Now the important thing is the staging.
How we do the staging? See, doctor, this is the surgical staging. Surgical biopsy, they will take it and then they make the stage there. Because like cervical cancer staging will be clinical staging. And surgical staging will be this one, and the another one, the one you remember, the endometrial cancer, which we finished it. This also will come in the surgical staging. Okay, surgical pathological. Pathological means means cytological or histological, whatever we have to know this thing. Okay, so we it will how we started staging of the ovarian cancer. What they will do? See, we have last time we discussed is the means how we are going to do it. Do it. We have laparoscopy. We have abdominal. Opening, laparotomy will do, and then the robotic now, and then they have robotic also, but it is in our country we don't have so much robotic surgery because it's very expensive in their field, also very expensive. It is not so much common, but they do in the big hospitals, they do it. And the money hospital means paid hospital, mostly they are doing now, they start to do the robotic. I don't know what is this thing they, what is the benefit, but only the money is the benefit there in the robotic surgery. Anyway, whatever it is, these are the things which we do it. Okay, now what we have to do, mostly we already know that the ovarian cancer we discovered in the very late stage. Okay, so if we know already this point, so what we have to do, laparoscopy, or this depends upon the patient condition. It has to be laparoscopy, or how much the ovarian cancer cyst, or how much the cancer she is having. So mostly they here the ovary is, if it is in the very early stage, stage 1A1, they can do by the laparoscopy. But after that, when the cancer is spread, it's not possible to do the ovary. Because why? Because the ovary, they have to take it out, the ovary complete, not to be ruptured. Because if it is a laparoscopy made, when they are taking out by the laparoscopy through a bag, sometimes if it is ruptured. So if it is ruptured, then the stage will be more, and she will be more in problem. So that's why in late, and it is discovering in the late stage. So that's why they go mostly in the laparotomy. Okay, so this is the purpose, this which we have to know. Now we will go for the staging, this FIGO staging. Doctor, you remember we just have that one, the endometrial cancer. They are dividing it up to C. So the thing is there also there. This is this all I am talking about, and where my reference is, these are the reference from the FIGO, FIGO and WHO. These all the things which I make these slides. These are my slides, my presentation slides, which I'm showing you. So these are all mixed from them, from their FIGO and this thing. So okay, first we will go for the staging. How the staging we will do it? Stage 1, they divide it into 3. So please, if you don't remember so much, try to remember like this. 1A means tumor is limited only one ovary. Okay, but the capsule has to be intact. That's all, finished. There will be no malignant cell or ascites will be there in the peritoneal washing. This just we have to know. Means 1A means tumor is limited to the one ovary. That's all, one. And 1B means tumor is limited to the one or the both ovaries there. But still the capsule is intact. Here the capsule is not ruptured. Please remember this thing. Okay, here one ovary is involved. 1A means one ovary is involved. Tumor is means limited to the one ovary, and capsule is intact. B means both ovaries are involved. Tumor is to be in the both ovaries. Okay, Ji? That's all. We understand. C means what? Tumor is limited to the one or the both ovaries or the fallopian tube, because they are making this as combination with the fallopian tube. Okay. Here, the C means what? We have to know. 1C1 means we are removing, when we are removing, there will be a surgical spell. Surgical spell means it, there is, when we are taking out the, means from that tumor, the ovary, the spell will be there. And 1C2 means capsule is ruptured before the surgery. Please, before the surgery. आपके बच्चे के नाच का ये पूछना चाहती थी, बच्चे के नाच के लिए करवा रही है अल्ट्रासाउंड।
डॉक्टर साहब अच्छा, प्लीज आप मेंसेस का कोई प्रॉब्लम है बंद कर क्या? लेगी, बंद कर लेगी, फिर मैं आपको म्यूट। अच्छा, अभी मेंसेस तो नहीं आ रहे आप? वल्लाह अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? अच्छा, 9 महीने डॉक्टर क्या? इतना मुश्किल ये हो रही है कि अच्छा, मेरा नहीं हो रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये है किसका, वरना मैं इनको कॉल से निकाल दूं। एनीवे, ओके ओके, चले अब हम कर रहे थे आगे, हम अपनी वो करते हैं, सॉरी इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब हम कर रहे थे, यहाँ पे आए थे, इसकी हमारी सी के ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ये क्लासिफिकेशन ही आपसे पूछते हैं, और ये जो सी वाली पूछेगी, सी वाली जो है ना एमसीक्यू का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें ये है कि लिमिटेड 1C1 मीन्स सर्जिकल स्पेल, 1C2 मीन्स कैप्सूल रप्चर बिफोर सर्जरी प्लीज, बिफोर सर्जरी ये याद रखिएगा। और 1C3 मीन्स ascites and the peritoneal washing, we found the malignant cell. Means a rupture or not rupture, but there is a malignant cell will there, because from the capsule it come out. The means malignant cell is come out. So how we remember like this? 1A1 means 1A means one capsule of the ovary. One ovary is involved, capsule is intact. B means both ovaries in involved, capsule is intact. C means surgical is means one or both ovaries or with fallopian tube, both are from the up there. So 1C1 means surgical spell, 1C2 means capsule rupture before surgery, and 1C3 means there will be a malignant cell or in the peritoneal washing, in the ascites or peritoneal washes. डॉक्टर अनिला आप हैं या कोई मुझे बताएगा ये क्या था? स्टेजिंग बताएंगे आप? जल्दी से बताएं ताकि फिर हम दूसरा करें। और प्लीज ये ख्याल रखिएगा अगर ये बंद हो जाता है तो अभी ये मुझे वार्निंग जब देगा, जब ये बंद हो जाएगा तो फिर हम दूसरी वो लिंक भेजेंगे, क्योंकि आज इंशाल्लाह इसको जल्दी से खत्म करना है। अभी शायद नहीं आने ला। चले ठीक है, हम स्टेज 2 पे पहुंचते हैं। स्टेज 2 का मतलब है कि ट्यूमर इन्वॉल्व both ovaries and the fallopian tube, and there will be a pelvic extension. See, pelvic extension means below the brim. Below the brim means below the brim. One will come above the brim and one it is below the brim. So 2 means below the brim. Below the brim means it will कहाँ जाएगी ये एक्सटेंशन या इम्प्लांट ऑन द यूट्रस पे जाएगी, यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब और ओवरीज पे चल जाएगी। अब ये यूट्रस पे आ रही है, ब्लो हो रही है। अब ब्लो की बात करें, ब्लो पेल्विस में क्या होता है? यूट्रस होता है, बाउल होता है, ब्लैडर होता है। तो देखेंगे इतनी जल्दी ये खौफनाक होना शुरू हो गई है स्टेज 2 में, इस वजह से ये इसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं होती है। अब स्टेज B2 क्या हुआ? एक्सटेंशन टू अदर पेल्विक इंट्रापेरिटोनियल टिश्यू। सो द डॉक्टर साहब इंट्रापेरिटोनियल टिश्यू क्या क्या होंगे? सारे जो भी हमारे पेल्विस के अंदर होंगे ब्लो में, उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब स्टेज 3 का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेज 3 है, ट्यूमर इन्वॉल्व्स वन और बोथ ओवरीज, fallopian ट्यूब, देन इट विल गो टू द पेरिटोनियल कैंसर। विथ पेरिटोनियल कैंसर कैसे पता चलेगा? हिस्टोलॉजिकली और साइटोलॉजिकली प्रूव हुआ है। ओके, और ये कहाँ से चला गया? ये आउटसाइड द पेल्विस पे चला गया और मेटास्टेसिस हो गई है विद lymph node इन्वॉल्वमेंट। डॉक्टर साहब देखिए स्टेज 2 एक्सक्यूज मी मैडम, यही है। मैडम ये पूछना चाह रही थी कि रीट्रोपेरिटोनियल और ये जो इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स के नाम बता दीजिए। अभी इसमें नीचे आता है, मैं करती हूँ, आती हूँ। अच्छा। इंट्रापेरिटोनियल और इसकी सारी चीजें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में आ जाएगा डॉक्टर साहब। अभी ये सारे ट्रीटमेंट में आएगा तो उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। अभी तो इसको ही कर लेते हैं, फिर उसके नीचे हम करते हैं। देखिए ये रेट्रोपेरिटोनियल की जो चीज़ें और पेरिटोनियम की जो चीज़ें हैं ना, वो अभी हम करते हैं, नीचे आते हैं, ये ट्रीटमेंट के उसमें आएगा। अच्छा, अब हम स्टेज 3 की पहले बात कर रहे हैं। स्टेज 3 में देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इतनी बड़ी लव स्टोरी है ना, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, डॉक्टर साहब ये इतनी यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। उनको पता है क्या, ज़्यादातर वो जो अगर ओवरियन कैंसर में आप जाएंगे और वो आप रिकॉल्स वगैरह इनमें देखेंगे, ज़्यादातर ये सी तक ही रहते हैं, A1 तक, क्योंकि इनको इसकी मोहब्बत होती है। और दूसरी इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो फर्टिलिटी चाहिए होती है पेशेंट को, तो उसमें क्या क्या होगा वो वाली बात होती है, वो इनके लिए ज़्यादा मायने रखती है बनिस्बत यहाँ तक पहुँचने के। अब देखिए डॉक्टर साहब, इसने मुझे वार्निंग देनी शुरू कर दी है
तो मैं अभी ये बस यही करके फिर मैं आपको दूसरा लिंक देती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ कितने मिनट है। अभी 9 मिनट इन्होंने कहा है, अभी 9 मिनट है, तो चले हम 7-8 मिनट में इसको पूरी करते हैं, फिर हम दूसरा करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ट्राई स्टेज करते हैं। 3 में क्या होता है, स्टेज 3 को आप ऐसे कैसे हाँ याद, हाँ, अल्लाह मियां, नहीं नहीं, ये इतना सही रखो, तो कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं होता। साहब आई हैव टू टेक हर आउट। ये आई थिंक इट इज फ्रॉम डॉक्टर नाहिद। सब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं इनको रिमूव कर दूंगी तो फिर सही नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम शी विल नॉट क्लोज, आई विल रिमूव हर। ओके, देखिए इसमें फिर क्या होता है कि स्टेज 3 की जो हम बात कर रहे थे उसमें हमारी बात ये हो रही थी कि ये ट्यूमर इन्वॉल्व करता है वन और बोथ ओवरीज का, जो कि साइटोलॉजिकली प्रूव करता है कि पेरिटोनियम आउटसाइड द पेल्विस। ओके, पेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो आउटसाइड द पेल्विस हैं डॉक्टर साहब, वो क्या क्या होंगे, और जो क्या क्या रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स क्या क्या होंगी। डॉक्टर साहब यही आपने सवाल पूछा था, ये अभी हम जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ये उसमें आएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, 3A का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड होती है। ठीक है, और ये इसमें डिवाइड किया A1 और A2। डॉक्टर साहब इसको छोड़ दें, ये नहीं याद होगा आपसे, अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये नहीं इतना कोई याद कर सकता। बस ये जो स्टेज 3 का जो इन्होंने ब्लैक ब्लैक लिखा है ना डॉक्टर साहब, ये याद कर लीजिएगा, यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। इसमें ही आपको समझ में आ जाएगी बात कि वो क्या क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में जो आएगा। ये जो इसको 3 और ये मैक्रो और माइक्रो को की जो बात कर रहा है डॉक्टर साहब, ये पल्ले नहीं पड़ने की। अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड, वरना एक्चुअल जो ये स्टेज 3 है ना, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, जो हमने किया था हम तो ऐसे ही करते थे। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू इट। अब स्टेज 4 की बात करें, ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस में चली गई है, और इसमें डिस्टल मेटास्टेसिस में क्या होता है, प्लूरल एफिजन हो गई है। अब जाहिर है प्लूरल एफिजन कहाँ जा रही है, ये लंग्स तक चली गई हैगी। और पैराकाइमल मेटास्टेसिस या मेटास्टेसिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के, जिसमें क्या होगा, एंग्वाइनल लिम्फ नोड भी होगी, लिम्फ नोड की आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होगी। डॉक्टर साहब हमारे दिमाग में हमें ये आना चाहिए, वो जब ट्रीटमेंट या हम जो भी कोई बात करेंगे 1C तक तो हमें आना चाहिए, पूरा पूरा हमें एक एक चीज भी हम इसमें से नहीं भूल सकते, ये वो हमें रटना है। स्टेज 1 की जो 1C तक है ना, वो हमें आना चाहिए। 2, वो भी हमें समझ में बात आ गई है। 3 के डॉक्टर साहब ये ब्लैक ब्लैक चलेगा, और 4 का देखें ये वाली चीज हो गई है। देखिए डॉक्टर साहब 4 में तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाती है, यहाँ तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस या एक्सटेंशन जो शुरू हो गई है ना, सेकंड से ही शुरू हो गई है, इसलिए इसकी बैड प्रोग्नोसिस होती है और ये लेट डिस्कवर होता है। क्योंकि लेट डिस्कवर कैसे होता, अभी बता रही थी मैं आपको कि इनको जो ज्यादातर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, पेन भी होती है, एब्डोमिनल स्वेलिंग भी होती है, ये ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें होती है, कोई इसकी पर्टिकुलर फीचर्स नहीं है जिसकी वजह से इसको डिस्कवर अर्ली कर लिया जाए। डॉक्टर साहब अगर हम कंपैरिजन करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ, तो उसको अर्ली डिस्कवर होता है, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। अर्ली डिस्कवर कैसे हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि उसको पोस्ट मीनोपाजल या या जो भी कोई रिप्रोडक्टिव एज में उसकी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से आपको उसको करना ही पड़ता है इन्वेस्टिगेशन। और बाज़ दफ़ा ये होती है पोस्ट मेनोपॉजल को अगर ब्लीडिंग भी नहीं हो रही होती है, तो उसको उसकी जो डिस्चार्ज होता है ना, वो फाउल स्मेलिंग होता है, उससे भी डिस्कवर हो जाता है। वो अर्ली इसलिए होता है, और ये लेट इसलिए होता है कि इसके सिम्टम ही नहीं पता चलते। हाँ, इसमें फायदा ये हो सकता है कि अगर उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो डॉक्टर साहब उसमें हम उसको ये जो ब्रेका 1 और ब्रेका जीन्स होते हैं ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है, और उसके लिए हम स्क्रीनिंग हम उसको कर सकते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो। ठीक है, वरना नहीं करते, वरना स्क्रीनिंग इनकी भी नहीं होती है, किसी की भी स्क्रीनिंग का टेस्ट नहीं है जिसको कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमारी ये बात हो गई, अब हम करते हैं ट्रीटमेंट में। देखिए डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट डिपेंड, अभी हमने ऊपर कहा था कि पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी, उसकी फर्टिलिटी विश पे, उसकी एज पे, ग्रेड ऑफ कैंसर पे। डॉक्टर साहब ये सारे मेरी प्रेजेंटेशन है, ये वही मैंने किया हुआ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, देखिए एडजुवेंट थेरेपी भी हम देंगे इसको, उसके साथ मतलब मेन ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब इसकी सर्जरी है। ठीक है, सर्जरी के साथ क्या होगा, एडजुवेंट थेरेपी होगी। एडजुवेंट थेरेपी में क्या क्या होगी, उसको कीमोथेरेपी हम कहते हैं, कीमो देते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, कीमो रेडिएशन कहलाती है ये। एक कहलाती है टारगेटेड थेरेपी, एक होती है इम्यूनोथेरेपी। डॉक्टर साहब ये सारी ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट इसकी है ओवरियन कैंसर की।
अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट स्टेज अगर हम स्टेज 1 से इसकी शुरू करते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरू होगा ये अर्ली स्टेज में। ट्रीटमेंट जो होगा इसका, ये जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का जो होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी और कीमोथेरेपी होती है। जो कीमो मेन है इसमें, रेडियो नहीं है डॉक्टर साहब। रेडियोथेरेपी मेन किस में है, ये मैं साथ के साथ इसलिए बार बार आपको बताती जा रही हूँ कि ताकि याद रहे, ये एमसीक्यू के लिए। मेन थेरेपी इसकी है कीमो, पहले सर्जरी है फिर कीमो है, या कीमो पहले कर लेंगे या फिर सर्जरी करेंगे, ये कहलाते हैं हमने। तो अर्ली स्टेज क्या होता है, अर्ली स्टेज लो ग्रेड में क्या होता है, ओनली सर्जरी होती है, और इसमें क्यूरेटिव रेट कितना होता है, 90% होता है। अर्ली सर्जरी, अर्ली सर्जरी क्या होगी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, टोटल हिस्टेक्टोमी करेंगे और बीएसओ करेंगे, ये होगा अर्ली कैंसर में। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये कैसे करते हैं, देखिए अगर हमने उसको लेप्रोटोमी किया है या वो कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो हमने इंसिजन देने के बाद फ्लूइड जो भी कोई हमें, जब हमने अंदर पहले जैसे ही हम अंदर जाते हैं एब्डोमेन कैविटी में, जो भी कोई हमें फ्लूइड मिलेगा उस फ्लूइड को हम लेंगे, वो लेते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं, ठीक है जी, वॉशिंग करके वो फ्लूइड लेते हैं हम, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हमने भेजना होता है। अब हमारे सामने समय पहले क्या आता है, ओमेंटम अंकल होते हैं, ओमेंटम को हमने लेता है तो ओमेंटम की बायोप्सी लेनी होती है। फिर हम उसकी बॉडी का पूरा उसकी पूरी बॉडी को देखते हैं, उसके चारों तरफ, मतलब उसको सारे वो जो वो एरिया है ना उसका एब्डोमेन में, सारे गटर्स जितने भी, जिसको हम कहते हैं कि चारों कोनों जो है ना, चारे कोनों, उसको हम उसमें देखते हैं कि भाई उसको, मतलब हम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ऑर्गन्स को, कि वो सही है क्या है। तो उनकी छोटी, अगर हम समझ रहे हैं कि कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी भी हम बायोप्सी थोड़ी बहुत की चीज़ों की ले लेते हैं, ठीक है जी। ये भी हमारा हो गया, हमारा काम हो गया। अब हमने उसकी वो भी निकाल ली, यूट्रस भी निकाल दिया, बीएसओ भी अब हमने कर दिया। ये अब अगर हमने इतनी एक्सटेंसिव सर्जरी अगर हम करेंगे, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, ये डी बल्किंग लेप्रोटोमी कहलाती है, डी बल्किंग लेप्रोटोमी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एज मच एज, डॉक्टर साहब क्या होता है कि ये जो ग्रेप लाइक फैशन, ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स की तरह से, जैसे वो जो मुलार प्रेगनेंसी में था, इसकी तरह से जाके है ना, ये पूरी बॉडी में जाकर इस तरह से ये सेकेंडरीज प्रोड्यूस करता है। तो उसको आप एज मच एज आप निकाल सकते हैं तो निकालेंगे, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर तक अगर रह गया तो इट कैन बी पॉसिबल, वो आप वो रह जाता है, क्योंकि रहेगा थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, आप पूरा चुन चुन के तो नहीं निकाल सकते। तो दिस इज लाइक आप बैठ के उसको चुनेंगे, चुनने को क्यों कह रहा है कि उसको डी बल्किंग करना, उसकी सारी चीजें निकालनी है। अब चाहे तो आप पहले भी निकाल सकते हैं, पहले भी उसको या तो कीमो दे सकते हैं, फिर कीमो के बाद डी बल्किंग लेप्रोटोमी भी कर सकते हैं, और उसके बाद भी कर सकते हैं। इसको क्या कहता है कि ये मोस्टली क्या होता है, पहले ये क्या करते हैं कि ये डी बल्किंग सर्जरी करते हैं, फिर उसके बाद 6 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं, ये कहलाता है एडजुवेंट कीमोथेरेपी। अच्छा जी, अब सर्जरी हम कैसे करते हैं, अब इस स्टेज की बात, देखिए ये हमने पहले अर्ली स्टेज की बात कर रहे थे, अब हम करते हैं स्टेज, डॉक्टर साहब ये कहलाती है सर्जरी। अब देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अगर ये बंद होने वाला है तो जस्ट आई विल सी, ये लास्ट सेकेंड है डॉक्टर साहब, अब ये बंद होने वाला है, सो आई विल मेक इट क्लोज एंड देन आई विल गिव यू द अनदर लिंक, एंड देन वी विल कंटिन्यू द सर्जरी एंड द एमसीक्यू। ओके जी, बाय बाय, आई विल गिव यू अनदर वन।